Students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting ratios. इसमें हम आज पढ़ेंगे नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो. Net assets turnover ratio establishes the relationship between revenue from operations and net assets or capital employed. It shows the number of times net assets or capital employed is used or turned around in earning revenue from operations during the year. Revenue from operations मतलब सेल्स से जो पैसा आता है that is revenue from operations. कंप्यूटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपन कैपिटल एम्प्लॉयड. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपन कैपिटल एम्प्लॉयड. नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो डिटरमिन्स द number of times net assets have been used to generate revenue from operations. The formula is net assets turnover ratio is equal to revenue from operations upon capital employed. तो revenue from operations means gross revenue less sales return if any. In terms of sales it means gross sales less sales return. ग्रॉस सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे. ग्रॉस सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा. एंड नेट एसेट्स मींस टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट ऑफ द फार्म. टोटल एसेट हो गया लेस करंट लायबिलिटीज यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. सिंस इट इज नोन एज also known as capital employed turnover ratio. इसको और भी बोलते हैं capital employed turnover ratio. Capital employed is the aggregate of shareholders funds. It is the aggregate of shareholder funds, share capital, reserves and surplus and long term debt. ये तीनों का टोटलिंग. आप लायबिलिटी साइड से निकालोगे तो ये लास्ट थ्री का टोटल निकाल लो. शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म डेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड. या एसेट साइड में टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंसेस के क्या है? नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज द एनालिसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसका एनालिसिस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का. द नंबर ऑफ टाइम्स नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड इज रोटेटेड और यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सेल्स जनरेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स कितने बार यूज होता है? हायर टर्नओवर रेशियो मीन्स बेटर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दस हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी. जितने ज़्यादा बार वो टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा और लिक्विडिटी उतना ज़्यादा आएगा. This is what we studied today is net assets turnover ratio या capital employed turnover ratio.